यूसीएल नाइट इज बैक और हम फुटबॉल फैंस वेट करते हैं कि ये वाले दिन कब आएंगे। दीज आर दी अच्छे दिन फॉर अस। तो एज ए न्यूट्रल फैन आज का जो मैच होने वाला है रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी, यार इसका हाइप तो उसी दिन बन गया था जिस दिन ये ड्रॉ हुआ था, जिस दिन ये फिक्सचर निकला था कि इस मैच में क्या होने वाला है। एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी ऑफ अस इज वेटिंग फॉर 1:30 AM कि जब ये मैच शुरू होगा और विल जस्ट पाउंड ऑन इट एंड वॉच इट, क्योंकि इसके पीछे इतनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है गोइंग इनटू द मैच। एक तरफ है रियल मैड्रिड बॉय सर्जियो रामोस जो कि आज पीएसजी के लिए खेलेंगे, और वहीं दूसरी तरफ है एम्बापे हु सपोज टू बी साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। तो सबके लिए ये भी चल रहा है डिलेमा कि क्या एम्बापे आज मैड्रिड के अगेंस्ट स्कोर करेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही क्लब है, वो है मेसी फैन क्लब, just to see that what is going to happen, and they don't care about Real Madrid or PSG and just want Messi to win. So the whole scenario behind this fixture is really nice. The narrative is really, really good, and we as a neutral fan are completely going to buy it. So I'm going to invite a guest here on my show who's another neutral fan, so we can discuss about this very hyped up fixture of Real Madrid versus PSG from a neutral perspective, and it's going to be quite fun. You know why? हम स्ट्रॉन्गेस्ट 11 करने वाले हैं, यू जस्ट इमेजिन दैट फॉरवर्ड लाइन और उसमें क्या होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जो एंड में दिखेगा तुमको। एंड अपने फॉरवर्ड लाइन तो डेफिनेटली मुझे बताना, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है टू बी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट कंबाइंड 11 ऑफ आवर टीम। माय गेस्ट फॉर टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अंकित फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। गो एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। So we are starting with the segment 1, which is the key battles. And I'll ask you that who do you think that is going to win that battle? तो सबसे पहला Okay. battle जो है वो है Casemiro versus Messi. So who's going to win this one? Oh wow, as in बहुत ही interesting है. Like Casemiro has been like in the form of his life. लेकिन यार Champions League night है. Like I have to go with Messi क्योंकि these are the nights that he's made for. And I think with Yeah. PSG they are pinning their hopes totally Messi के साथ. तो Messi के साथ जाना चाहूंगा in this one. All right. Second is Vinicius Junior versus Achraf Hakimi. Wow, as in ये honestly is the battle of the tie. And it's been spoken about enough. तो दोनों ही अटैकिंग है काफी, लेकिन आई थिंक विद हकीमी एक्सपेक्टेड कि ना वो डिफेंड भी करे। आई थिंक इसलिए मैं जाना चाहूंगा विनीशियस जूनियर के साथ, क्योंकि आई बिलीव कि विनीशियस जूनियर के पास कवर है with Mendy, probably being fit. So I'll go with Vinicius Junior in this one. Let's go with Benzema versus Marquinhos. Oh wow, Benzema, a full fit Benzema definitely wins against Marquinhos. लेकिन is he fully fit? Like I'm not too sure from reports. But what And if like Marquinhos, he's available? What if he's available and he's going to, play in the match? And what do you think who's going to win the battle then? या ऑनेस्टली अगर उसको बोला जाए कि यार आपके दोनों पैर काम कर रहे हैं, ही विल टर्न अप, लाइक दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर दैट बेंजेमा इज। तो Yeah, एज एन yeah. ऑनेस्टली like we have to be fair that Benzema is one of the top 5 strikers in the world currently, as much as मैं personally Marquinhos का बहुत बड़ा fan हूँ, लेकिन yes, absolutely I think Benzema, if he's fit, like if he plays, like I'm going for He's Benzema going to this win one. this one. All right. So the last battle is Mbappe versus David Alaba. आई थिंक डेविड अलाबा बहुत ही अच्छा कर रहा है इन recent weeks, and of course lot of talk था about him moving to Real Madrid, whether he'll fit and all that. लेकिन फिर भी when it comes to defensive ability, I think एम्बापे शायद ही कोई डिफेंडर होगा वर्ल्ड में to kind of beat him on his pace. तो I think एम्बापे has to be hands down the winner in this one. तो अभी तक क्या ड्रॉ चल रहा है 2-2. I think it's 2-2, right? आपने Benzema and Messi, Benzema and Correct, Vinicius correct. Junior को choose किया, and then Messi and Mbappe. So you're going with the strikers, the forwards. You think that they're going to win the battle anyway in both the sense. That will make for a good game. I'm sure the neutral is at least चाहेंगे कि ज्यादा goals हो, और Yeah. strikers अगर form में that'll give a exciting game ना. Now I'm going to ask you one key battle that I have not included here, but you think that that's going to be interesting. आई थिंक मिडफील्ड बैटल, सेंट्रल मिडफील्ड, क्योंकि रियल मैड्रिड की जब बात करते हैं ना, रियल मैड्रिड इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्ड, काइंड ऑफ एज इन थ्री पीपल आउट देयर. हम कैसेमिरो की बात किए थे, आई नो, बट जस्ट द मिडफील्ड Modric. अगेंस्ट मिडफील्ड, क्योंकि अगर पीएसजी में अगेन इड्रिसन गनागा इज बेसिकली अ विनर, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जीत कर आए हैं, सो ही विल बी ऑन अ हाई अगर वो अवेलेबल है इन दिस पर्टिकुलर गेम. तो हिम अगेंस्ट मे बी टोनी क्रूज, क्योंकि टोनी क्रूज जो बॉल स्प्रेड करते हैं वो अलग ही लेवल है व्हेन ही इज ऑन फॉर्म. Yeah. तो आई थिंक दैट विल probably बी द बैटल जो आउटकम होगा, क्योंकि अगर forwards की बात कर रहे थे कि they'll score goals, but how will they score goals if they're not getting Yeah. passes from Toni Kroos and basically PSG in midfield. So I think the midfield battle would be the key for me overall.
That is a very interesting one actually. It'll be really good to see what happens there क्योंकि बहुत quality players हैं. That is why it's a very interesting game. एक में एकदम superstars हैं भरे हुए टीम में और दूसरे में बहुत experience है टीम में. They've played with each other so much and Carlo Ancelotti and Real Madrid. So it's going to be a really really interesting match. सबप्लॉट्स भी है ना काफी, क्योंकि लाइक यू सेड राइट नो, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स और इवन द कोच जो है ना एक्स रियल मैड्रिड कोच और प्लेयर्स हुए हुए, तो इट डिपेंड्स ऑन, एक बैटल ये भी होगी कि हाउ विल द क्राउड रिएक्ट, लाइक आई नो कि काफी प्लेयर्स है, लाइक केलॉर नवाज फॉर एग्जांपल वाज अ लेजेंड, Hmm. आई डोंट मरिया, लॉट ऑफ प्लेयर्स है जो दोनों साइड में है ना, दोनों साइड के लिए खेले, तो क्राउड रिएक्शन विल बी ग्रेट, क्योंकि इफ Yeah. दे स्टार्ट बूइंग और वेदर दे सेलिब्रेट देम, Mhm. आई डोंट नो, मतलब दैट्स समथिंग व्हिच इफेक्ट होगा डेफिनेटली प्लेयर्स को। The Madrid boy, Sergio Ramos, is going to be there now. So, is he करेक्ट, लेकिन available? Will be playing? I don't know. But then, just the thing, like just the thought behind it, कि हमेशा वहाँ backline में देखते थे Real Madrid के लिए, and now he's here in PSG. So that is why the narrative is very beautiful. So that's why let's absolutely. see how it turns out to be. Let's move on to our segment two. एंड मैं इसमें शुरू ही प्रिडिक्शन के साथ करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता ठीक है है। हु इज गोइंग टू विन द मैच? मतलब अगर दोनों लेग्स का अलग से बात करें तो फर्स्ट लेग में तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि पीएसजी जीतना चाहिए, ऑन द फैक्ट कि मैड्रिड रिसेंट गेम्स में आई थिंक खाली एक ही जीती लास्ट 4 गेम्स में, वैसे वर्सेस पीएसजी है ना, पीएसजी भी मर मर के जीती है जस्ट अबाउट, लेकिन यार विन इज विन एज दे से राइट, या और लाइक आई सेड चैंपियंस लीग नाइट्स है, और अगर पीएसजी में ये हार गए और डोंट गेट अ विन, इट्स वेरी डिफिकल्ट पीएसजी को जीतना ओवर बोथ द लेग, सो फर्स्ट लेग तो मैं जाना चाहूंगा पीएसजी, लेकिन आई एम अ रोमांटिक, मैं चाहूंगा कि सेकंड लेग में अ पर्सन हु हैज नॉट बीन फेवर्ड एट ऑल, एडन हजार्ड कम्स एंड गेट्स द विनर एट द बर्नाब्यू एंड इट गोस टू पेनल्टीज, और कोटवा द स्नेक फॉर चेल्सी फैंस, दिस इज द पेनल्टी। See, I was thinking that we are neutral fans here, but I forgot that there is Eden Hazard as well, and there is Chelsea. So come on, there is a little bit of you might be tilted towards Eden Hazard or नहीं, him doing some. नहीं, ऑनेस्टली मैं न्यूट्रल जैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ही इज गॉट द रॉ डील, हाँ आई नो वो इतना अच्छा नहीं खेला है, बट आई थिंक इन Yeah. रिसेंट वीक्स फॉर आई नो व्हाटएवर रीजन Ancelotti is not using him, so I think probably Hmm. this that will be the tie that वो use करना ही पड़ेगा if they Hmm, need a hmm, goal, hmm. right? So that's what I'm Yeah. talking about. No, I understand that. So you're going to go for like, do you have a score in your mind that this is going to be the score for today's match? I think tonight definitely मैं देख रहा हूँ कि यहाँ PSG 2 गोल मारेगी, and Real Hmm. Madrid will get at least 1 goal, so I'm going to 1 to PSG. All right. So if you're talking about my prediction, then I think I'm going to go for a 2-2 draw. I think that it's going to end up in a draw. I don't think that any team is going to take it. एक तो ना दोनों टीम इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों में, तो इट गेट्स इंटरेस्टिंग कि या तो बहुत ही वैसा डर के भी खेल सकते हैं कि यार गोल पहले कंसीड करना नहीं है, या एकदम लाइक डोंट केयर, जस्ट हैव टू परफॉर्म एंड गेट अ गोल फर्स्ट, तो मे बी उस Correct. मेंटालिटी से खेले. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से वो लोग पैन आउट करेंगे इस चीज को. ये फर्स्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट टाई है ना इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री नियर बाय, जो जहाँ पर अवे गोल्स रूल नहीं हो रहा है, तो आई थिंक दैट विल बी हाँ. रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक क्या यू हैव अ पॉइंट देयर, क्योंकि अवे गोल्स होता था तो टीम्स यूज्ड टू डिफेंड आफ्टर स्कोरिंग अर्ली, तो ये नहीं या होने वाला, तो या दैट्स प्रॉब्ली अ फेयर पॉइंट। या एग्जैक्टली. एंड आई थिंक दे हैव प्लेड लाइक 10 मैचेस, जिनमें से अगर रियल मैड्रिड का भी बोलूं, सिंस उनको चैंपियंस लीग में कितना एक्सपीरियंस है और वो भी जीतने का रहा, इतने ट्रॉफीज उन्होंने जीते हैं, तो दे हैव हैड द लीड ऑफ जस्ट अ गेम. लाइक 4 मैचेस मैड्रिड जीता है और 3 पीएसजी जीता है, तो इट्स अ वेरी करेक्ट। फेयर बैटल. सो दैट इज वाई थोड़ा वैसा लग रहा है कि क्या हो सकता है इस वाले में, क्योंकि पीएसजी आया ही उतरा ही इतने सुपरस्टार प्लेयर्स के साथ है बिकॉज दे वांट टू विन द चैंपियंस लीग. तो या देखते हैं. बट the next question for you is that who's going to be that key player for you into this match? Real Madrid का भी एक key player and एक PSG का key player. देखो रियल मैड्रिड में तो आई थिंक इनफॉर्म प्लेयर के लिए ही जाना चाहूंगा, दैट इज विनीशियस जूनियर। विनीशियस Hmm. जूनियर मतलब अंडर द रेडार गया है, आई नो स्पेशली ला लीगा फैंस जानते हैं कि व्हाट लेवल ही इज बीन एट, लेकिन Hmm. ऑनेस्टली इन वर्ल्ड फुटबॉल ही इज नॉट सेलिब्रेटेड एज मच फॉर व्हाटएवर मे बी रीजन, वो इतना फ्लैशी नहीं है ऑफ द पिच और Hmm. व्हाटएवर, राइट? तो ही इज मतलब आर्ग्यूबली मैं बोलूंगा वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, that is the Hmm. level that Vinicius Junior. So he is key. Like we already discussed the battle, Yeah. with Hakimi, and I see that's the reason I saw Vinicius kind of winning it. Hmm. And what was the other one? Sorry. For PSG, the key player. Okay, for PSG, I think yeah, मतलब it's a easiest kind of answer. Like सब लोग मेसी के लिए ही जाएंगे, लेकिन I think I would go for Mbappe.
because again, like, Mbappe जो एक second है ना, he just needs that second, 1 second, and he Mhm. just, kind of beats the defender. And he's probably going to be, at that point, क्योंकि यार, everyone knows, no secret, he's probably going to be going to Madrid next साल Yeah. ना. So he has that extra mojo इस match के लिए, तो I think probably, yeah, as in he'll probably give it that extra. I feel that he'll be the key for PSG. Mhm. Even my key player for PSG is Mbappe because the same reason behind this that he knows that Real Madrid के साथ थोड़ा होना है आगे कुछ link होना है नहीं होना है then he has a point to prove to PSG as well that what kind of player he is. So I think that Mbappe is going to turn up in this match really really well. And then if you're talking about Real Madrid right now, I think Courtois is going to be really important for them, the key player for them because see Courtois is a kind of player that can save you in a match if things are not going well. Yeah, fair Such point. an experienced player for them. So I think that the key player in Real Madrid for me is going to be Courtois. So let's move on to the next question, and that is what is that advantage that you see that Real Madrid have over a team of superstar players that they can win it? Real Madrid over the years has been filled with superstars, right? और Hmm. उनको पता है कि how to kind of go about things, and that's the DNA of Real Madrid. Hmm. Versus say maybe PSG, जो PSG है, मतलब हाँ, last decade में आप बोल सकते हो कि they've also had a lot of superstars, लेकिन again Yeah. have they achieved as a team together? नहीं. So Real Hmm. Madrid have that, and they can tackle not just in their team but in the Hmm. opposition as well. उनको पता है, like I know that they might be missing Sergio Ramos in this particular game. Like you said, like he would have been a huge influence for PSG. Yeah. क्योंकि such players है ना, क्या करते हैं, they get under the skin of the opposition, especially Hmm. when आपको पता है कि superstars है opposition में, and they know how to kind of manage situation or gamesmanship जो बोलते हैं ना, Hmm. that is something that I think I am assuming Sergio Ramos must have thought enough to basically Militao देखे हैं last, I think Yeah. group stage में last game, if you remember, he kind of got Nico Barella red card for Inter, and that was Yeah. what I think I'm talking about, right? So उनको पता है how to play with, a team with superstars, and a team, they're playing against an opposition which is also Hmm. having superstars. So I think I'll probably have guys like Militao probably coming up in this particular battle in terms of the superstars. Mhm. See, I also think that we can answer this in the advantage that Real Madrid has in form of manager. Like they Yeah, have, yeah, so Carl, there is Ancelotti and there is Pochettino, and then if you think that Pochettino does he have it in him to go ahead with these superstar players and win the match against Real Madrid? Can he do that? And if he actually does that, and I think that will be a huge boost for him as well. That if he wins this one because it's fair actually point. very difficult to manage a team that has so many players and ye hota hai not everybody can manage a bigger squad and I think Pochettino has a point to prove here. Let's see if we can do that or not, so that'll be interesting to see. Now let's not waste Absolutely. any more time, and I want to get right into the strongest combined 11 because the thing is that बहुत सारे प्लेयर्स हैं चूज करने को और बहुत सारा डिबेट हो सकता है इसमें। तो आई लव इट अगर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग तुम कमेंट साथ-साथ में करते रहना कि तुमको क्या लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में कौन होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे जो ओपिनियंस है तुम्हारे ओपिनियन से डेफिनिटली डिफरेंट हो सकते हैं, बट हम मिलके कंबाइंड 11 बनाएँगे एंड विल ट्राई एंड गेट टू अ कंक्लूजन कि हमारा एक टीम कैसा दिखता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट बिलो। तो This लेट्स should स्टार्ट be विद fun, द yeah. yeah, this should be really really fun because बहुत अच्छी बातें हैं बात करने को इसमें. So I'll just show you. We'll start with the goalkeeper. So this is our Wow. segment 3. Yeah, so these are the goalkeepers that we have. See, just look at that quality. Like, and look at Donnarumma is there. You know, Yashin Trophy जीता है. Then has been Euro Cup Player of the Tournament. मतलब क्या बोले and the thing is that he's not even getting time. PSG में start करने एग्जैक्टली, को. एग्जैक्टली। और दूसरा जो बैटल है ना, केलोर नेवास और कोर्टोआ एक्चुअली इन मैड्रिड भी बैटल कर चुके हैं एक सीजन के लिए, तो दैट्स अनदर सब प्लॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। लाइक Yeah. ऑनेस्टली इट्स probably the most difficult position when you're talking about goalkeeper, लेकिन अगेन maybe I'm a little bit old school, मैं and strangely मैं जो पिक करूंगा, my choice, I don't know about you, but Hmm. for me that choice probably will not play the match itself, and that is Keylor Navas. Keylor Navas को पता है actually in big games, Hmm. in Champions League nights हम देखे हैं, मतलब those kind of Hmm. saves that Hmm. he makes, मतलब अलग ही level है, and he's done that Hmm. in the past, and not just too far back, even as far as last season उसने Hmm. किया था. I think we forget कि PSG had beaten as in Bayern Munich. So
लॉट ऑफ क्रेडिट जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है बेचारे को. आई डोंट नो, अगेन इट्स अबाउट दैट फ्लैशीनेस. तो आई विल गो विद Yeah. केलोर नवाज, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज. आई नो जो देख रहे हैं वो लोग सोचेंगे यार ये तो बंदा स्टार्ट भी नहीं करेगा मोस्टली, लेकिन व्हाट डू यू थिंक दीपिका? सी यू आर राइट, लाइक हम इससे पहले उसके बारे में बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट सर्जियो रामोस हैज ऑन द टीम. तो आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट. एंड आई रिमेंबर लिवरपूल का मैच चल रहा था, अवे फिक्सचर था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, एंड सर्जियो रामोस वाजंट प्लेइंग इन इट, ही वाजंट फिट, एंड वी लॉस्ट दैट मैच बाय द वे. विनीसियस जूनियर टर्नड अप इन आई डोंट नो व्हाट फॉर्म दैट डे, और उस टाइम से उसका फॉर्म गिरा ही नहीं है नीचे. बट देन व्हाट हैपेंड, वो बेंच पे मतलब वहां स्टैंड्स में था सर्जियो रामोस, और वहां से ही वाज सच अ बिग इन्फ्लुएंस फॉर द टीम. मतलब तुम टीम में खेल भी नहीं रहे हो, तो दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट दीज प्लेयर्स हैव, दीज अल्ट्रा प्लेयर्स हैव फॉर देयर स्क्वाड, फॉर देयर टीम. तो सर्जियो रामोस अगर होता तो वुड हैव बीन अलग काइंड ऑफ वाइब इन द मैच फॉर पीएसजी, क्योंकि वो जिसमें खेल रहा है अभी ऑब्वियसली एलिजेंस टू दैट टीम ओनली. तो आई थिंक नवाज इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर एज वेल. तो अगर हम नवाज की बात करें, ही विल टर्न अप व्हेन देयर आर बिग मैचेस एंड यू नीड हिम, उसका परफॉर्मेंस चाहिए तुमको, एंड ही विल परफॉर्म. तो सिंस यू आर द गेस्ट, वी आर गोइंग टू गो विद नवाज, बट आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स, यार आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स डोनारुमा आल्सो, आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स कुतो आल्सो, सो आई डोंट नो आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स कि क्या यार इसमें तो है बोलेंगे. ना, वो बोलते हैं ना, जस्ट टॉस द कॉइन, लिटरली लाइक दैट काइंड ऑफ पोजीशन दिस इज. सही में, एंड यूजुअली दैट डजंट हैपन, बट दैट्स व्हाई दिस पिक्चर इज इंटरेस्टिंग कि कोई भी रखो यार, एवरीबॉडी सो गुड. सो आई जस्ट ऐड हियर वन सेकंड. राइट, एक पोजीशन हमारा हो गया है. लेट्स मूव ऑन. सो दीज आर द डिफेंडर्स दैट वी हैव. तो अभी ऐसा है, सेंटर बैक पेयरिंग के बारे में पहले बात करते हैं. आई थिंक आर वी गोइंग फॉर 4-3-3? व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेशन आर यू थिंकिंग टू गो फॉर? मतलब दोनों टीम्स 4-3-3 खेलते हैं ऑफ लेट, सो आई थिंक लेट्स गो विद 4-3-3 टू बी फेयर, नहीं? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सेंटर बैक पेयरिंग. व्हाट डू यू थिंक? Wow, I think कितने सारे options हैं यहाँ तो. मतलब I think मतलब I went on record saying that Marquinhos is probably one of the better defenders that I like. मतलब एक या all-rounder player है. या Plus he is your leader, plus goal scorer, and he is most often than not fit. तो Marquinhos I would certainly pick his team में, honestly ओके. speaking. And the other one, yeah, I think David Alaba probably is a logical choice. Again, I think Ramos isn't fit. वो prove नहीं किया PSG में, so I don't think या we can pick Ramos. And I know Militao has been brilliant. Probably Militao, आप बोल सकते हो, has been better than Alaba at times. लेकिन Alaba brings that creative element, which probably Marquinhos will bring that strong, that center back. तो मैं जाऊंगा Marquinhos और Alaba. Looks like a good pairing, नहीं? इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड पेयरिंग. मेरे को थोड़ा वैसा भी लग रहा था कि आई वुड वांट टू गो फॉर द सेंटर बैक पेयरिंग जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खेला है. मींस आई लाइक Mhm. रिलायबल सेंटर बैक्स, इवन इफ दे मेस अप इन अ गेम और टू डज नॉट मैटर. तो मुझे होता है कि जो एक दूसरे के साथ बहुत खेले, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग, यू हैव टू बी देयर विद ईच अदर इन दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो मुझे पता नहीं क्यों मिलिटाओ एंड डेविड आलेबा का ज्यादा लग रहा था कि दे हैव बीन प्लेइंग विद ईच अदर सो मच. तो एक Yeah. understanding it, शायद strongest 11 में they would do good. But like I said, since you're the guest, so we are going to go for Marquinhos or David Alaba. We'll go for that because Thanks for I the bias. Thanks for the bias. नहीं, if you want to change your decision, मतलब मुझे कुछ नहीं है. Like if you think that Yeah. we should नहीं go मतलब for. I honestly feel कि मिलिटाओ बहुत मतलब he brings to the table in terms of basically just that gamesmanship and other things. लेकिन यार Hmm. Marquinhos in a knockout fixture you have to pick Militao versus Marquinhos. Honestly, will touch your heart and tell me, like I would pick Marquinhos. I'll be honest. गाइस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो कि तुमको क्या लगता है. हमारे थोड़ा डिसीजन में इधर उधर हो रहा है, बट दैट इज द फन ऑफ इट, कि सबका डिसीजन Right. कुछ भी हो सकता है इधर. तो तुम लोग भी डेफिनेटली बताना. आई जस्ट शो यू. ये बना है अभी तक हमारा. दिस इज परफेक्ट फॉर यू. Yeah, yeah. परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन नाउ. एंड सो लेट्स टॉक अबाउट द राइट फुल बैक फर्स्ट. अच्छा, राइट फुल बैक लाइक it depends on कौन है विंगर to kind of cover. लेकिन मतलब just on paper, I think the better defender at right back is probably Carvajal. लेकिन again वो recent months में इतना खेला है कि नहीं, that is questionable. और या. Hakimi has been probably along with Trent, one of the wing backs in the world. Like let's be या. honest, जो consistently खेला है. तो in terms of consistency in recent months देखा जाए तो, and with this national team as well, तो Hakimi has to be the fair pick at right back for me. What do you think?
This is where our choice matches. I think it's going to be Hakimi for me as well. Because I think he has a point to prove to Real Madrid here, don't you think? That Oh yes, Real Madrid. of course. They had two options, right? एक तो मतलब जब वो आई थिंक इंटर मिलान गया था एंड बाद में भी आई थिंक दे डिड नॉट इवन बिड, तो आई थिंक दो बार नहीं, उसको है ना रिजेक्शन मिला है, तो या डेफिनेटली। दैट इज़ व्हाई आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव हियर एंड प्रॉब्लम इज़ विनिशियस जूनियर को रोकना है। तो वो भी हुँ, बहुत बड़ा बैटल है। तो यार पॉइंट प्रूव करे तो कैसे करे? एक ऐसा प्लेयर है सामने तुम्हारे तो दैट्'ll बी एन इंटरेस्टिंग बैटल। दैट इज़ व्हाई आई वुड लव इट कि अगर हाकिमी हमारे लिए मतलब हमारे लिए क्या हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में इधर हो तो। सो आई विल जस्ट शो यू गाइस तो दिस इज़ द टीम अभी तक जो बना है हमारा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट फुल बैक। I'll put it here. So ओके। this is the these are the defenders that are there. So left full back के लिए who are you going to go with? I'm sure like people watching, a lot of romantics out there like me बोलेंगे Marcelo has to be in यार, come on, like he's a legend. लेकिन again we're not talking about being a legend, नहीं तो हम सर्जियो Yeah, रामोस को लेते। exactly. तो लेफ्ट बैक मतलब तब तो मतलब I think there's not going to be much debate. I hope it's got to be Mendy. Mendy has been a really good full back for Real Mm-hmm. Madrid. I know Nuno Mendes is upcoming, लेकिन I think that has been one of the weak points of PSG in a sense. तो और मेंडी जब भी खेलता है दे आर मोर सिक्योर जस्ट एज अ टीम, दैट्स व्हाट आई फील। Mm-hmm. व्हाट डू यू थिंक, मेंडी इज फेयर? आई थिंक नाउ वी आर आर थिंकिंग इज मैचिंग हियर कहीं कहीं मेरे को भी यही मेंडी ही लग रहा है कि होना चाहिए इधर तो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल डिफेंस दैट वी हैव क्रिएटेड हियर आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस दैट वी हैड सो दैट्स क्वाइट गुड आई थिंक लेट्स मूव ऑन नाउ तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है मिडफील्डर्स में मैंने एक दो मिडफील्डर जो मतलब स्क्वाड में थे मैंने वो रखे नहीं है तो क्योंकि जगह नहीं थी एक में रखने को मैंने बोला बहुत है इन्हीं में चूज कर लेंगे हम कुछ ना कुछ तीन ही रखने हैं तो व्हाट डू यू थिंक कौन से मिडफील्डर्स यहाँ पे इसमें जाएंगे वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस बिग टाइम यहाँ तो, मतलब अगर हम सीडीएम सीडीएम से सीडीएम शुरू तो आई करें, थिंक कासेमीरो, Casemiro has to be, मतलब he has to, he's one of the CDMs of the world, like I would say, मतलब आई मैं तो एग्री, मतलब heartbeat I would pick him. Danilo आई has एग्री been विद good यू। for the national team, लेकिन yeah, very very far off. I don't see him as a हुँ, हुँ। decent CDM. सो वी हैव कासेमीरो एज़ अ सीडीएम तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं मिडफील्ड में, तो क्या लगता है? यहाँ यार बहुत ही डिफिकल्ट है, लाइक मे बी आई विल गो व्हाट यू सेड ना, फॉर डिफेंडर्स, फॉर सेंटर बैक्स से ना जो लोग साथ में खेले हैं, क्योंकि आई थिंक वही सेंट्रल या मिडफील्ड में बहुत ट्यूनिंग चाहिए होती है, बट एट द सेम टाइम यार एबिलिटी में देखा जाए तो मार्को वेराटी, वाइनाल्डम ऑन दैट डेज, लाइक यू नो बेटर देन एनीवन दैट जीनी वाइनाल्डम ऑन दिस डे वो एकदम एग्ज़ैक्टली वर्ल्ड बीटर हो सकता है, लाइक आई एम विद यू। या, बट पीएसजी में ऑनेस्टली ही हैज नॉट रियली प्रूवन, एंड हुँ, रिसेंट मंथ्स के फॉर्म में भी देखा जाए तो ही इज नॉट, एज इन ही इज नॉट बैड, लेकिन कंपेयर्ड टू व्हेन यू से टोनी क्रूस एंड मॉड्रिच, मतलब हुँ, for me, looking beyond them is very difficult. As much as I love Marco Verratti and Wijnaldum, like I said, तो मैं हुँ। जाना चाहूंगा as in it's an all Real Madrid midfield. I know PSG fans मारेंगे मुझे भी ढूंढकर, लेकिन I'm going with all Real Madrid midfield. You might disagree. What do you think? आई एग्री विथ लुका मॉड्रिच बिकॉज़ उसका फॉर्म है जो गिर ही नहीं रहा है। ही इज़ दैट फाइन वाइन कि Hmm. जैसे-जैसे साल बढ़ते हैं ही हैज़ बीन लाइक ग्रोइंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो वो तो है कि आई एम गोइंग टू गो फॉर लुका मॉड्रिच एंड देन अगर हम लेफ्ट की बात करें तो आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन टोनी क्रूज़ एंड विराटी। मुझे लग रहा है विराटी शुड गेट अ चांस एज़ वेल कि अगर हम उसको हाँ, I think रखें उधर। that's fair, क्योंकि क्योंकि वो मोर he's also a ball player and a tackler, and मतलब हुँ। क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आई थिंक आई एम ओके विद वेराटी और क्रूज, टू बी ऑनेस्ट। चलो इस वाले डिसीजन में मेरे वाले डिसीजन के साथ चलते हैं। यार मैं अभी अभी देख रहा हूँ यार, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैड्रिड के लेवल में नहीं आते, लेकिन पीएसजी के मिडफील्ड से भी बेटर है, मतलब आई फील कैमाविंगा विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन हाँ इट्स टू अर्ली, आई नो। Yeah, I'll just show people the squad that we have made till now. So this is what we have created. Oh भाई, this looks so good. What do you think? भाई मजा आ रहा है देख के एक बार बहुत बढ़िया वाह, प्लेयर्स हैं ड्रीम टीम अभी होगी तो ऑलरेडी। एग्जैक्टली यार अभी ये तो कुछ भी नहीं था अभी डिबेट तो ये है दिस इज द अभी डिबेट तो यार मेरा ना एड्रेस पर डालना नीचे, लाइक डेफिनेटली पीपल विल बी लाइक ओके फाइन, मतलब ऑनेस्टली लाइक विदाउट एक्चुअली having any sort of bias whatsoever, like we have to go with the recent form, like that comes into picture, आप जब भी पिक करते हो यार this guy has been better, I think ऑब्वियसली for एग्जैक्टली main striker Benzema kind of makes Real Madrid, वो basically picks himself, he has been brilliant, uh, again, like there might be a discussion that Mbappe,
I don't know, like, for me, I would still pick Benzema just as a main Yeah. striker. Lekin probably, or rather, okay, can I leave Messi out of this team? Is it even allowed? वो rules में है कि नहीं? I don't know. I don't know what to say Oh my about that. God. Wow, this is like अच्छा तो देखो विनीशियस जूनियर एंड बेंजेमा डेफिनेटली हैव टू बी इन द टीम ऑनेस्टली मैं बोलूं तो या रियल मैड्रिड को डिफाइन करते हैं एंड रियल मैड्रिड ओवर द कोर्स ऑफ Yeah. लास्ट फ्यू मंथ्स हैज बीन बेटर लाइक इफ यू से How will लास्ट you how फ्यू will you मंथ्स leave Mbappe? How are you going to leave Mbappe here? यार एम्बापे को तो फिर भी छोड़ते हैं मेसी को तो कैसे छोड़ सकते हैं मैं वो सोच रहा हूँ कि यार नेमार की तो बात ही नहीं की अभी तक हाँ, सो like okay, I'm going with a hard call यहाँ पर और I know that I'll be hated, but again यार ये fun के लिए कर रहे हैं जो भी watch कर रहे हैं please I kind of love everyone on the pitch and that's the whole point. Think like this is an imaginary team ना तो and guys, this on is the form thing. This is the thing कि yeah. इतने इतने बढ़िया players हैं that we're not able to decide. अगर एक ही दम में लिख देते, that is another thing. So this since there is a debate, we know, like understand that it is very very difficult to pick that strongest combined 11. So that is why I'm saying that you don't forget to comment below तुम्हारे strongest कौन से रहने वाले, especially forwards में. I would love to know what you guys think about it. बाकी अभी अंकित से पूछते हैं. अंकित is in that hot You're seat putting me right this now spot. to answer. नहीं नहीं तो like I said like based on form last few months में मेसी को कोविड वो सब भी हुआ था if I'm not wrong तो I think वो मेरा एक kind of go to reason है लेकिन I'll go with certainly I think एम्बापे Yeah. बेंजीमा और विनीशियस जूनियर और हाँ आप सही सुन रहे हैं मैं मेसी को छोड़ दिया हूँ only for this imaginary team for the time being 2 दिन बाद में Oh. अलग बोलूंगा sure I don't know what you Nitika tell me Uh, I'm not in the hot seat, guys. So come on, I don't oh have my to answer. god But nahi, I agree. This is the toughest decision to make when it comes to it because इतने बढ़िया players हैं. जब तुम सोचते हो कि यार लेफ्ट में विनीशियस जूनियर तो बनता है, लेफ्ट विंगर तो विनीशियस जूनियर के बिना कौन होगा? बट देन फिर सेंटर फॉरवर्ड की बात करें, एम्बापे किसको मतलब बेंजिमा have been everybody playing so well. Then right पे मेसी किसको मतलब it is a very very difficult decision to make and I'm going to go with Ankit's decision here. So guys, it's not my choice but it's Ankit's choice because since he's the guest on my channel, so मरवाओगे I'm आज तो मुझे I'm going to go with Ankit's decision here and I agree with you. तो what do you think कि center में कौन खेलने वाला है? I think Benzema is a natural center striker. Mbappe दोनों साइड खेल सकता है because of his pace Hmm. change of pace So rather. So I right में think एम्बापे को right में Mbappe को डाल देते हैं और Vinicius definitely प्रेशर तो should है be ही. left. But हाँ, Messi is a super sub, don't worry, and he's going to get the winner against any team in the world. Absolutely. See, this is the team that we have got. And imagine, इस टीम में अभी मेसी नहीं है, नेमार नहीं है, ईडन हैजार्ड नहीं है, गैरेथ बेल नहीं है. मतलब वो लोग बेंच पे हैं. डू यू इवन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैच दैट इट इज गोइंग टू बी या फिर मैं ही हाइप हो रही हूँ इस मैच को लेके कि क्या और होगा? Di Maria, to be honest, Di Maria हम इतना बात नहीं करते and he has Yeah. probably got getting the winner in most of the round of 16s for Mhm. PSG, recent years Exactly. में. तो awesome team, सच में. तो एग्जैक्ट डी मरिया भी रह गया यार बात करने को. वही वही तो है ना. व्हेन इट कम्स टू मुझे लग रहा था कि इफ आई हैव टू लाइक मैं हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट 11 करती हूँ बट शैल आई डू इट फॉर दिस वन. आई थॉट आई हैव टू डू इट फॉर दिस वन. लाइक कोई भी टीम तुम निगेट कर सकते हो बट नॉट इसके लिए बिकॉज इट्स सच अ गुड टीम. आई फील आई एम क्वाइट हैप्पी विद व्हाट वी हैव क्रिएटेड हियर. एंड wait, I'll just remove this. So guys, you guys have seen the Yeah, it's team. almost 50-50 by the way. इसमें टीम में भी देखा जाए तो मतलब I think there are 5 versus 6 PSG Yeah. versus Real Madrid. So it's going to be बहुत होलसम मतलब टीम बना है. बहुत होलसम टीम है यार. तो आई थिंक बढ़िया काम किया है यार अगर सोचा जाए मिलके इस चीज के लिए. सम हैप्पी चलो good. I hope people एब्सोल्युटली. watching kind of also pick their teams और मतलब are feeling कि what it is to be in the hot seat. सही में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक अभी क्या होने वाला है क्या नहीं. बट आई होप यू हैड फन. हमने इसमें प्रोडिक्शन भी कर लिया, हमने इसमें बात भी कर ली गेम के बारे में. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 हमने बनाया है कंबाइन करके. हमेशा मौका नहीं मिलता ऐसे अच्छे फिक्चर्स देखने का. तो अभी जब हुआ है तो वी डिड दैट. सो अंकित आई होप यू हैड फन हियर. थैंक यू सो मच लास्ट मोमेंट तुमको बुलाया और आए आप करने को. तो इट्स रियली गुड टू डू दिस विद यू and we'll do it again. Guys, don't forget to subscribe to his channel. Link उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी भी मुझसे ना ढंग से बोला नहीं जाता. मैंने कल से 200 वीडियोस बना लिए होंगे and still I'm fumbling. Look at that. But anyhow, नहीं, it's been brilliant. मतलब again, I always tell to Nitika ना कि basically Nitika's channel basically is one of those channels
जो मैं बेसिकली if things are really busy, like Nitika is saying, like 200 videos, जब मैं I'm going through some one of those days, I just go to IndieCop and watch one of the videos, दिन बन जाता है. That's the kind of videos that you have, and I really look forward to basically any chat हम जब भी करते हैं. And certainly you're welcome to my channel, as you know, always. But yeah, it was great fun, and hoping that we have a great match. Absolutely, and thank you so much for such kind words. I know that you're always commenting, and उससे क्या होता है थोड़ा हिम्मत मिलता है कि what you're doing is right. So thank you so much for that. And guys, please Thank you, like, deserve it. subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from us. Baki, thank you so much for watching. Namaste.